हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू द फिस्डम वेल्थकास्ट। आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम आपके साथ आपके पास लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड वेटरन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, especially asset management, Mr. Suresh Soni. Right now, he is the CEO of Baroda BNP Paribas Mutual Fund. So, Suresh, a very very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Thank you, Nirav, and delighted to be a part of this. So, Suresh, the first question, without any further ado, just to give you a background and context, आज डेली हम पढ़ रहे हैं और जो जो मीडिया फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक सनसनी सी पैदा हो चुकी है मार्केट्स को लेकर, राइट? निफ्टी एट ऑल टाइम हाई एंड सो मेनी काउंटर, सो मेनी हैवीवेट scripts are really hitting 52 weeks high, and people are just generally exuberant at this point in time. But many analysts and investors are also quick to point out कि ये जो exuberance है, ये केवल exuberance ही नहीं बल्कि irrational exuberance है. The fundamentals are not really supporting it. So the world is divided into two. One who are almost I'd call them hopeless cheerleaders. They will keep cheerleading no matter what. And on the other side, we have hopeless naysayers who will be pessimistic no matter what. So the world is divided into two large factions of investors. So how are you reading into the situation? Or like I always ask, एक सवाल है जो हर हर पल हर दम हर इन्वेस्टर के मन में होता ही है, मार्केट क्या बोलता है? तो आपके हिसाब से, फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, आपके हिसाब से मार्केट क्या बोलता है? तो नीरव, पहली चीज तो मार्केट इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि लोगों के दो डिफरेंट व्यू हैं। यस, क्योंकि सब लोग अगर एक ही साइड में होंगे तो ट्रेड कैसे होगा। करेक्ट। पर देखिए, ऐसा है कि मार्केट न्यू हाई बना रहा है, लेकिन न्यू हाई डजंट मीन फ्रोथ है। मार्केट अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स हमारा 100 होता था 1979 में, और वहां से ये अगर 62,000 आया है, तो इस पूरी जर्नी में बहुत बार न्यू हाई बनाई होगी। Because every time you go from 100 to 200, 200 to 1000 or whatever, every time it's a new high. So market की नेचर है न्यू हाई बनाना, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अर्निंग्स बढ़ती है कंपनीज की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो मार्केट अपने आप उसको रिफ्लेक्ट करता है न्यू हाई बनाकर। बट न्यू हाई का मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन न्यू हाई से एक्सपेंसिव हो गया। आपको वैल्यूएशन को अलग तरीके से मेजर करना पड़ता है, ये देखिए कि मार्केट प्राइस अर्निंग में कैसा है। Is it going into irrational zone? Are the companies becoming very unreasonably priced? So वो सही टेस्ट है, rather than कि ये नंबर जो है आज का न्यू हाई है। न्यू हाई मार्केट बनाएगा, उसी तरीके से मार्केट चलता है आगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा बाजार जो है वो पिछले करीब करीब, अगर आप न्यू हाई को छोड़ के भी आप इवन अभी आप अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो हमारे मार्केट का 5-7% करीब रिटर्न होगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे ऊपर गया है। पिछले अक्टूबर से लेकर जून तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की अराउंड $35 बिलियन की सेलिंग आई, मार्केट थोड़ा गिरा, उसके बाद में मार्केट वापस से इंप्रूव हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि पिछले एक साल के अंदर में हमारी अर्निंग्स आगे बढ़ी है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, हमारे इस क्वार्टर की अर्निंग पिछले क्वार्टर से बेटर है। तो इसलिए मार्केट ऑन एन एवरेज, अगर मैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, तो हमारा जो मार्केट है इस वक्त वो करीब करीब 20 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे चल रहा है, 20 टाइम्स FY 2024 के पी पे चल रहा है। हमारा 10 साल का एवरेज 18.5 के आसपास रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा 10 साल के एवरेज से मतलब 5 या 10% कुछ ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हो गया है। मतलब ये नहीं कि इरेशनल एक्सुबरेंस में है। और वैल्यूएशन या प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। सो ऐसा नहीं है कि 18.5 ही एब्सोल्यूट ट्रुथ है और 18.25 पे खरीदना है या 19 पे बेच देना है, ऐसा नहीं होता है। इसके 18.5 could also be right, 20 could also be right, 16 can also be right. The bigger question to ask is, what are the drivers in for the market going forward? What can derail it? Are the earnings keeping pace? Is the environment all right? तो अगर हम ब्रॉडर आउटलुक को देखें इस वक्त, तो इस साल में कैलेंडर ईयर 2022 के अगर आप शुरुआत से अभी देखें, तो अगर किसी ने आपको कहा होता है कि भाई ऑयल की प्राइस जो है वो 110 चली जाएगी $70 से, यूएस फेडरल रिजर्व 300 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट बढ़ा देगा, आरबीआई रेट बढ़ा देगा, रशिया यूक्रेन में वॉर हो जाएगी,
रुपये 12% नीचे आ जाएगा। तो अगर आप ये सारी हेडलाइन का सोचते तो आप सोचते भाई इस मार्केट में पैसा नहीं डालना है मुझे। राइट। इसके बावजूद हमारा मार्केट ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, ये एफआई सेलिंग $35 बिलियन के बावजूद भी ये मार्केट आगे बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही है, हमारी कंपनीज की वर्किंग अच्छी रही है, और उसकी वजह से हमारा मार्केट स्टैंड आउट किया है बाकी वर्ल्ड के मार्केट से। और कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी रही क्योंकि हमारी ज्यादा करके कंपनीज डोमेस्टिकली ड्रिवन है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रही है। इंडिया फॉर्चुनेटली टचवुड कोविड का हमारे यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। और उसके बाद में जब लोग 2 साल के कोविड के लॉकडाउन के बाद आ रहे थे तो यू हैव ऑलवेज सीन दिस दिवाली वाज वन ऑफ द बेस्ट दिवाली, दिस वेडिंग सीजन इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन, यू आर नाउ हैविंग द लॉन्गेस्ट पीरियड वेटिंग पीरियड ऑन कार्स। आप अगर एयर ट्रैवल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई कितनी एयरपोर्ट पे क्यों इतनी बढ़ गई है। सो इंडिया इकोनॉमिकली काफी अच्छी सिचुएशन में है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी वजह से इंडिया का मार्केट टिका हुआ है या थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है पिछले साल से। मुझे नहीं लगता कि एक्सुबरेंस है। There will always be some pockets in the market which can be slightly overvalued, but overall, on the whole, I will not say market is exuberant. I won't say this is a market which is going to fall sharply, कि मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया और यहाँ से 40% टूट जाएगा, 50% टूट जाएगा, वैसा नहीं है। मार्केट में नॉर्मल करेक्शन आते रहते हैं, वो आता रहेगा, लेकिन ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन और अपने मार्केट की सिचुएशन काफी ठीक है। Right. Absolutely. I feel you elaborated upon that wonderfully. And this brings me to my next question, सुरेश जी। देखिए, जब भी ऐसी बातें होती है कि एक्सुबरेंस या फिर टू रिच वैल्यूएशंस वाले जो हेडलाइंस होते हैं, राइट, या फ्रॉडीनेस के जब भी बात होती है, उसके साथ ही साथ आप देखोगे दैट ऑफन जो पर्सनल फाइनेंस सेक्शन होता है, वहां पर एक टॉपिक बहुत ही हाईलाइट हो जाता है, वो होता है एसेट एलोकेशन का सब्जेक्ट। कि this is when people start taking a look back at asset allocation. Is this the right time to rebalance assets and tilt it towards fixed income? Do you think the valuations are too rich and one should move away from equities, trim exposure to equities, and probably rotate some of those funds to fixed income? ऐसे कई सारे questions आते हैं आज। Over the past month, if you see, asset allocation, rebalancing and trimming equity positions is quite the flavor of for most pink publications, right? But इसके साथ ही साथ काफी लोगों का ये भी मानना है, स्पेशली इन्वेस्टर्स का ये मानना होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एसेट एलोकेशन वगैरह का आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल इक्विटी में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, 100% पैसा इक्विटी में लगा लीजिए, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द बेस्ट asset class. So asset allocation, while the media says it is a function of equity valuation, a large base of investors feel it is a function of your holding horizon, holding period, or investment horizon. And like with most things in life, I am led to believe that the truth lies somewhere in between the extremes. It's not as straightforward as either of them are portraying. So आपके हिसाब से ये जो asset allocation कहा जाता है, what are your views on it? What is the right way to approach it? Should it be basis how richly are equities valued, or should it be simply basis अगर आपका long term है तो 100% equity रखिए और short term है तो fixed income बढ़ा दीजिए? What do you think is the right lens? देखिए 3 फैक्टर होते हैं, होल्डिंग पीरियड, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट वैल्यूएशन। तो होल्डिंग पीरियड एक चीज होती है, उसके अलावा रिस्क टॉलरेंस भी होती है। भले ही मेरा होल्डिंग पीरियड लंबा हो, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अगर 20% का लॉस नहीं ले सकता हूं तो शायद मुझे इक्विटी में आना नहीं चाहिए। Right. और एसेट एलोकेशन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप ये सोचिएगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100% इक्विटी में आपने रखा, भले ही आपका 10 साल का होराइजन है, आपने जनवरी 2020 में एलोकेशन किया और मार्च में कोविड आ गया, और आप सडनली देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 40% के आसपास गिर गई है। By March to May, for post-COVID, the portfolio value has fallen by 40%. Now, that kind of a situation, irrespective of your time horizon, will also unnerve people. तो इसलिए आपको अपना खुद का, you have to understand yourself, your risk tolerance. Also, you have to keep aside some money for emergency funds.
और उसके बाद में आप जो बैलेंस पैसा है उस पर आप अगर 3 से 5 साल तक का पेशेंस रख सकते हैं तो आप इक्विटी कंसिडर करिए। सबसे पहले आप ये भी आइडेंटिफाई करिए कि ये पैसा इक्विटी में नहीं डालेंगे क्योंकि ये मुझे बैक एंड कॉल पे चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म में मेरे को जरूरत पड़ती है, या मेरे कुछ इमीडिएट गोल्स है, अगले 6 महीने में मुझे कुछ खरीदना है, या मेरे लिए कुछ इमीडिएटली कुछ प्रोवाइड करना है इमरजेंसी के लिए, तो वो आप सेफ रखिए। इसलिए एसेट एलोकेशन का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में जो पैसा आपके पास में मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उसमें से आप इक्विटी पर व्यू लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि वैल्यूएशन के हिसाब से एसेट एलोकेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे कि आपको मैं बताऊं कि भाई आपको रोज सुबह दौड़ना चाहिए और अच्छा सेहत बनाने के लिए एक बैलेंस फूड खाना चाहिए। वो कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। तो जब आप इक्विटी और फिक्स्ड इनकम से एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, अब ऑफन टाइम और we are overpowered by the emotions. The market momentum takes us, and therefore we are not able to rationally make the allocation. Yes. बढ़ते हो बाजार में ऐसा लगता है कि अगर आपने बेच दिया तो आपको लगता है 3 दिन बाद में यू हैव अ रिग्रेट फीलिंग कि अरे जल्दी बेच दिया। Yeah. और गिरते हो बाजार में आपको इक्विटी में एलोकेशन करते हुए डर लगता है क्योंकि मार्केट हो सकता है आपके एलोकेट करने के बाद में 1 हफ्ते बाद शायद और गिर जाए। Yes. तो इसलिए इन्वेस्टर्स बहुत बार रैशनली इन्वेस्टमेंट एलोकेशन नहीं कर पाते। उसके अलावा इक्विटी से फिक्स्ड इनकम अगर आप स्विच करते हो तो एग्जिट लोड आता है, कभी कभी आपको उसके अंदर में जो है कि आपको सही टाइमिंग पता नहीं होती है, टैक्सेशन का इफेक्ट आता है। टैक्सेशन का इफेक्ट आता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम रखा तो वो हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर चला जाता है। तो ये एफिशिएंटली इन्वेस्टर्स कर नहीं पाते। तो एसेट एलोकेशन का एक बड़ा आसान तरीका दूसरा होता है कि आप एसेट एलोकेशन फंड्स जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में उस कैटेगरी को आप कंसीडर करें, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं या फिर मल्टी एसेट फंड होते हैं। ये फंड्स जो है आपका पैसा इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में एलोकेट करते हैं और एक्टिवली करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट व्यू। So that is another way of doing it, and doing it in a professional manner rather than being carried away by emotions and also suffering the short-term capital gain taxes impact or exit load impacts and Right. changing your status here and there every time. Right. Absolutely. In fact, हमने भी ये notice करा है, and right now it is surfacing a lot in the limelight. अपने category की जिक्र की, balance advantage funds, या जिसे सेबी ने dynamic asset allocation funds करके categorize किया है, a very similar thing, right? So ये जो category के funds होते हैं, these seem to be deceptively simple, and I call it deceptively simple because इसका in a nutshell, if one has to explain what do the funds in this category do, it is as simple as ये along with market cycles आपका equity और fixed income का allocation balance करते रहता है, right? But like you said, it is easier said than done. It is as easy as saying that you must exercise right, eat right, and you'll remain fit forever. It's easy to say it, but to do it is difficult. And we notice that this category is gaining a lot of attention, but as I already said, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। वैसे ही ये सेम रिफ्लेक्ट कर जाता है ये कैटेगरी के डिफरेंट फंड्स में भी। while most funds in other categories, जो मेन स्ट्रीम कैटेगरीज होता है, अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट द टॉप 2 quartile funds in a let's say a large cap category और लेट्स से थीमेटिक कैटेगरी, वहां पर रिटर्न्स में डिविएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, एटलीस्ट ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड इन टाइम, अनलेस समथिंग हैज गॉन हॉरिबली रॉन्ग विद अ कपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। बट बैलेंस एडवांटेज फंड्स में अब क्लियरली शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत ही डिस्टिंक्ट डिविएशन पाओगे, राइट? अप्रोचेस सभी के बहुत अलग है, एंड हेंस परफॉर्मेंस सभी के अलग होते हैं। सो व्हाट आर द न्यूआंसेस एज अ फंड हाउस, एज अ फंड मैनेजर, जो आप ध्यान में रखते हो जब भी आप आपका खुद का बैलेंस एडवांटेज फंड मैनेज करते हो? एंड दिस इज आल्सो ड्राइंग अपॉन द फैक्ट दैट Baroda BNP Paribas mutual fund runs amongst one of the most efficient balance advantage funds that are out there. आपका फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा रिस्क ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न्स भी ऑफर कर रहा है इन्वेस्टर्स को और कंसिस्टेंटली करता आया है। सो व्हाट इज योर फ्रेमवर्क? आप कैसे अप्रोच करते हैं इसे, एंड what is it that you believe helps you stand out in this
deceptively simple category. हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा है कि ये जो कैटेगरी को प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट होता है, और क्या है कि इमोशंस जो होती है ना, वो हमेशा इन्वेस्टिंग के वे में आती है, और हम लोगों ने ये बिहेवियर बहुत लंबे टाइम से देखा। जैसे आप अगर देखेंगे तो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे को इक्विटी फ्लोज जो आते हैं इक्विटी फंड्स में, वो पीक ऑफ द मार्केट पे आते हैं। Yes. जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो सबको लगता है कि भाई मेरे पिछले 6 महीने के रिटर्न अच्छे हैं, पिछले 1 साल के रिटर्न अच्छे हैं, तो मैं और पैसा इक्विटी में डाल दूं। और जब मार्केट खराब होता है, पी लेवल अट्रैक्टिव होता है, और जो पैसा डालने का वक्त होता है, उस टाइम पर इन्वेस्टर्स की का पैसा आता नहीं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर उस टाइम पे होपलेस होकर पैसा निकाल लेते हैं, जबकि करना एग्जैक्टली उल्टा चाहिए, जहां पे कि आपको मार्केट अगर गिरा हुआ है तो आप पैसा डालें। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन वे में ये इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हमने जब ये फंड डिजाइन किया था, और ये फंड हमने लॉन्च किया था 2018 में, आज जब हम बात करें तो 4 साल फंड के कंप्लीट हो चुके हैं। ये अराउंड लॉन्च पर ये करीब 300 350 करोड़ का फंड था। वी आर नाउ अराउंड 10 times the size, and since inception we have done quite well, you're right, both in terms of peer group as well as in terms of our beating the benchmark. It's a top quartile performance that we have over the last 3 years as well as since inception. तो हम लोगों ने क्या किया कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, इसके पहले हमने कहा कि हाउ विल वी डू असेट एलोकेशन, लेट्स ट्राई टू डिफाइन अ फ्रेमवर्क। तो हमने 72 डिफरेंट फैक्टर्स को पिछले 20 साल के लिए एनालाइज किया, टू फाइंड देयर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स। बिकॉज मार्केट्स जो है वो कभी, मतलब अलग अलग थियरीज है, राइट। पीई पे चलता है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस है, काफी सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमने इसको डीकोड करने के लिए 20 साल की हिस्ट्री देखी, 72 फैक्टर्स देखे, और उसमें से हमने 4 फैक्टर आइडेंटिफाई किए जो हमें लगा कि आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर विच आर प्रिडिक्टर ऑफ वेयर विल द मार्केट गो और हाउ आर द इक्विटी मार्केट्स लाइकली टू परफॉर्म। और उसके बेसिस पे हमने मॉडल डिजाइन किया, उस मॉडल को बैक टेस्ट किया। बैक टेस्टिंग के रिजल्ट बड़े अच्छे लगे, फिर हमने उसको लाइव एनवायरनमेंट में टेस्ट किया, और उसके बाद फंड लॉन्च किया। तो ये हमने लॉन्च किया था 2018 में, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत सारे साइकिल देख लिए। नॉर्मली इतना ऐसा होता नहीं है कि आपका 40% मार्केट डाउन भी आ गया, उसके बाद में मार्केट पूरा रिकवर भी कर गया और न्यू हाई भी बना दिया। Through all those cycles, what we have seen is that our model has been able to predict equity allocation quite well. जैसे आप देखेंगे कोविड के टाइम पर we were at about 87% investment in equity, and sometime late last year we were as low as about 30-35% in equity. So equity allocation systematically हम मॉडल को फॉलो करके इक्विटी एलोकेशन को एडजस्ट करते हैं, और जब मार्केट नीचे होता है तो हमारा इक्विटी एलोकेशन हम बढ़ाते हैं, और जब मार्केट काफी एक्सपेंसिव होते जाते हैं तो हमारा इक्विटी एलोकेशन हम कम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इमोशंस नहीं आए इसके रास्ते में, इसके लिए हमने मॉडल डिजाइन किया है। सो देयरफॉर वी आर एबल टू इन अ डिसिप्लिन्ड वे मेक इन्वेस्टमेंट एंड मेक एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो ये जो एलोकेशन होता है हमारा, वी स्ट्रिक्टली फॉलो द मॉडल, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, and that has really worked out quite well. Stock identification within that equity allocation is of course what we do as a normal process, but the core of this model is essentially trying to identify those main factors which impact the market going forward, and उस ratio में और discipline तरीके से उसको invest करना होता है। अब इसका एडवांटेज ये हुआ है कि पिछले अगर आप देखेंगे 4 साल में तो हमारा एवरेज इक्विटी एलोकेशन करीब 50 से 55% के बीच रहा है, बट उसके बावजूद जो फंड का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन हैज बीन मोर देन 15%. इट इज in line with most of the large cap fund performance, or probably better than the average large cap fund performance. तो जो इक्विटी मार्केट का पूरा रिटर्न आया है, करीब करीब उतना रिटर्न आपको इसमें मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी रिस्क जो है ऑन एन एवरेज वो 50 से 55% ही रही है इक्विटी मार्केट की। So that is the beauty of this product. So in terms of the volatility, it tends to be lower volatility because equity allocation obviously is lower on an average compared to normal equity fund. Yet it is able to generate fairly good returns from investors perspective. तो उससे दो चीजें होती है, एक तो वॉलेटिलिटी कम होने से आपका एक्सपीरियंस जो है डाउनसाइड वॉलेटिलिटी का थोड़ा कम होता है, सो यू आर एबल टू स्टे लॉन्गर इन द फंड,
and therefore you are able to compound your wealth over a period of time. Hmm. So, Suresh, is it fair to assume at this point कि अगर मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर होता है और उसका केवल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ही इज नॉट वेरी श्योर ऑफ हिज रिस्क प्रोफाइल, उसे मार्केट वैल्यूएशंस एक्सेट्रा समझ में नहीं आती, उसे केवल एक अच्छे एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में या व्हीकल में इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? ही जस्ट वांट्स टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या क्या ये मानना सही होगा दैट द इन्वेस्टर कैन सिंपली इन्वेस्ट इन अ बैलेंस एडवांटेज फंड एंड रिलैक्स अबाउट इट, कि मान लीजिए अगर 5 साल या ऊपर हो, इफ ही डज नॉट रियली वांट टू बॉदर अबाउट वैल्यूएशंस एंड he does not really want to suffer through the volatility, is this an easy go to investing method by to simply park in a efficient, very good balance advantage fund and just let it be there? Will this suffice as a strategy for the lazy retail investor? This should work for most people, very frankly, because इसमें क्या होता है कि 3-4 चीजों का हमने ध्यान रखा है. वन इज रीबैलेंसिंग, सो दैट ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता है, और दूसरा हम लोगों ने इसको टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाई है. तो आपको ये पता है कि इक्विटी का टैक्सेशन कम होता है, फिक्स्ड इनकम का टैक्सेशन ज्यादा होता है. तो इसके अंदर में स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है कि हमेशा 65% अलोकेशन इक्विटी या हेज्ड इक्विटी में रहता है, तो इसका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी जैसे होता है. तो वो भी एडवांटेज है इसके अंदर में जो इक्विटी फंड्स के अंदर होती है, और ओवरऑल रिस्क भी कम है. तो yes, it can be a core allocation product which investors can make, and indeed from a overall risk adjusted return perspective it works really well. लेकिन Absolutely. इक्विटी मार्केट में हम लोग बड़े आप अगर पिछले 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 14 से 16% के आसपास इक्विटी मार्केट कंपाउंड करता है. Correct. लेकिन कंपाउंडिंग के लिए जरूरी है कि आप यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड. अगर आप गलत टाइम पे ट्रेन से उतर गए तो फिर आपकी कंपाउंडिंग वहीं रुक जाती है. Right. So a fund which has lower volatility than equity fund does help you stay invested and also captures the market participation for you. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जैसे कि आपने कहा, अगर आप गलत टाइम से ट्रेन पर उतरते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप गलत स्टेशन पे उतरे हैं, बिकॉज व्हाई बी एट अ प्लेस वेयर यू डोंट वांट टू बी, जस्ट बाय making a wrong move. So absolutely makes a whole lot of sense. Suresh ji, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे. आप काफी सालों से इंडस्ट्री में रहे हो, काफी इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर से भी इंटरेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आप, आई एम श्योर, you yourself have some really rich investing experience by yourself. So from an investor perspective, or rather from a perspective of watching investors over the years, आपके हिसाब से what are the most common mistakes that holds an investor, or rather pulls an investor away from achieving any success in investing? What are the biggest mistakes? It could be behavioral, technical, anything, but what are those mistakes that investors should watch out for? जैसे हम बात कर रहे थे अभी गलत टाइम पर ट्रेन से उतर जाना, सो वो एक बड़ी चीज होती है जहाँ पे कि या तो आपने मतलब अपनी फंड रिक्वायरमेंट को ठीक से समझा नहीं है, या आपने अपना टेम्परामेंट ठीक से नहीं समझा है. सी बेसिकली अगर आप शुरू से ही आइडेंटिफाई कर ली कि ये इन्वेस्टमेंट मैं 5 साल के लिए कर रहा हूँ और ये अमाउंट जो कैपिटल है इसके ऊपर में 20% के ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट हैज इट्स ओन नेचर. You will not be able to control it. Yes. It goes over a long period of time. It certainly goes up, delivers you good returns, but it unfortunately does not go in a straight line. Right. So it will go around here and there, and you have to be able to sit through it. तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग अपने एसेट एलोकेशन को बराबर से नहीं करते, या तो हम लेवरेज करके इक्विटी में पैसा डाल देते हैं. जैसे बहुत बार डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती है वो यही होती है लोगों की. हियर से पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं. इनफैक्ट हम लोग अगर कहीं मूवी देखना भी जाते हैं ना, तो हम लोग 2 लोगों से पूछते हैं कि यार ये मूवी कैसी है, उसकी रिकमेंडेशन लेकर फिर जाते हैं, मतलब अपनी ड्यू डिलिजेंस करके जाते हैं. और बहुत बार स्टॉक इन्वेस्टिंग वेयर यू आर पुटिंग सीरियस अमाउंट ऑफ मनी, समटाइम्स यू जस्ट गो ऑन सम रूमर्स और सम
व्हाट्स अ फॉरवर्ड दैट हैज कम टू यू. Yeah. सो एक तो डिलीजेंस करें, दूसरा टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को अपने समझ कर फिर इन्वेस्ट करें, और Yes. तीसरा जो है कि डोंट लूज योर हेड इन वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी इफ एनीथिंग इज अपॉर्चुनिटी स्पेल्ड वेरी डिफरेंटली. Yes. अगर आप वॉलेटिलिटी को एज अ अपॉर्चुनिटी समझें Mm. और कोविड जैसे फॉल में अगर आप थोड़ा पैसा और डाल सकें, और वो तभी होगा जबकि आप ठीक से अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, आपके पास में कैश फ्लो बचा हुआ है, तो आप अगर ठीक से अगर आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ है तो आप शायद और भी पैसा डाल सकें और आप अपनी एडवांटेज बना सकते हैं उसको, रादर देन गेटिंग स्केयर्ड कि Right. अभी तो इतना नीचे गिर गया, अब क्या करूं, जो है वो लेके निकल जाऊं. Right. वैसा नहीं. और लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए. Right. Right. इंडिया इज द बेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Mm. इट इज अ पिटी दैट हमारे यहाँ की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री जो है वो आज के 15 साल पहले इतनी डेवलप नहीं थी. Yes. इसकी वजह से हमारी कंपनीज के अंदर में शुरू में, other than the promoter, the biggest group that who bought stocks were foreigners. Yeah. Thankfully, I think financial awareness has increased. People like you and other publications have really worked hard to kind of bring these financial products to people, and therefore there is an opportunity to invest now for long term. Yes. These asset classes, equity, mutual fund, ho ya balance funds, they generate returns which are nearly twice of the return that you can get on any other instrument in the country. I mean, you can't get this kind of a return anywhere else. All that it requires is a certain amount of understanding, patience, and ability to stay through. As long Absolutely. as you are able to create a proper investment plan, stay through, I think this works brilliantly. I feel Suresh, one thing really popped out. जो आपने एक स्टेटमेंट में सारा एसेंस कैप्चर करा कि volatility is just opportunity spelled differently. I feel that captures the entire essence also, right? One must view volatility with a very different perspective, and they will be able to view it from a different perspective only if they form an attitude and a bent of mind in the way you suggested, the way they should look at things, right? आपने साथ ही साथ एक जिक्र किया था एट द स्टार्ट ऑफ इट. आपने कहा था कि नुकसान तभी होता है जब लोग अपना खुद का टेम्परामेंट मिसजज कर लेते हैं, right? And generally we have also noticed, many people write to us and we realize that often investment के समय we have a tendency to either over or underestimate our risk taking ability or a risk taking willingness for that matter, right? एक जैसे काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो 20% वोलेटिलिटी स्टमक कर सकते हैं. उन्हें लगता है कि 20% is okay, 20% is not a whole lot till the time that 20% drawdown actually happens, till the time that actually happens, right? And that's when things start to really get out of control. That's when panic starts setting in, and that's when most of the mistakes happen. So I don't know if this has a straight answer or not, but I'm going to take my shot at it and ask you, is there any good way, reliable way with which one can assess their own temperament apart from the standard risk profilers which bucket us into 5 categories with 5 questions? Is there any other way with which we can be more conscious about our temperament? A very good question. And in fact, that is something that all of us are looking to design over a period of time, right? I think you have a questionnaire. I'm sure we have a Yes. questionnaire also, and a lot of other people have designed. These are something which we try to generically create. Of course, because we are trying to reach out to a large mass of people. Yes. But there is also another way of doing it is actually having a conversation with somebody who deals with it day in and day out. So maybe people like you or anybody else in the financial advisory who deals with investors, and then you can have a proper chat. Because beyond the standard questionnaire, there's always something unique about your own investment plan or your own needs. I mean, you might want to, let's say, prepare your child for an education abroad, and you may Yeah. be saving for that, which is 3 year down the line. Yes. या फिर आपको अपना घर खरीदना है 5 साल बाद, आपको उसके लिए सेव करना है, या एक फॉरेन हॉलिडे के लिए सेव करना है. तो सबकी अपनी अपने गोल्स होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होती है और अपना टाइम होराइजन होता है.
Yeah. इसलिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चनर सबके लिए 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, Right. एंड इसीलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है जहां पर आप उसके साथ बैठ करके ये डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि while I spoke about downside, let me also say that the biggest risk of investing is not investing. Yes. आप मतलब इतना नहीं हो जाए कि आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो आपका पैसा फिर बाद में बैंक डिपॉजिट में 7% को पोस्ट टैक्स करेंगे तो शायद 4 या 4.5% आपके हाथ में आएगा। उस पे you will not even be able to beat inflation. So Right. you have to make investment, you have to understand the space, you have to understand yourself, and then move forward. Yes. It's not Yes. very complicated. It Yes. is simple, basic rule of compounding. India is a growing economy. हम लोग जो है अगर आप देखेंगे तो in the year 2007 we were 14th largest economy in the world. Hmm. By 10 years back we were among the top 10. Now we are among the top 5 economies in the world. India is growing. You have an opportunity to participate in it. This industry allows you to invest as little as 5,000 rupees lump sum or even SIPs of lower amount. I Yeah. think this is indeed the easiest way of managing your money, putting it to work and compounding it over a period of time. Just try and understand it a little bit, both from your appetite for risk and saving goal perspective. And it's a very easy thing to do. I mean, after that, operationalizing it and investing is very easy. और दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे. I have nothing against it. I'm sure if you have the skill, please do it. But there are a lot of biases that come in when we manage money directly. So देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, there is a always a cost bias that comes in people कि आपने अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा है, अगर वो 120 पे चला जाता है तो आप जल्दी बेच देते हैं क्योंकि आपको 20% प्रॉफिट दिख रहा है. लेकिन Hmm. अगर वो गिर के 70 आ गया है Hmm. और वो कंपनी की न्यूज फ्लो खराब है, not many people have the wherewithal to sell it. Yeah. They may probably choose to average it at a wrong time. So there are a lot of those challenges that come in when you go direct also. Or you may not do direct proper allocation. You may be overexposed to certain sector, certain stock. It's better to use a professional way of investing. We are a very promising market. We are one of the fastest growing economy in the world. Now the opportunities are available to participate in a very simple manner, even in a low ticket, in various forms in systematic investment, one-time investment, balanced product, equity product, and a variety of products within that. I think investors should really consider making the most of these opportunities. Absolutely. I feel you made a very important point even at the start of it. हर एक की requirements unique होती है. And personal finance is called personal for a reason, right? It has to be highly personalized, and that's the reason why we are around. So, for the viewers, if there's anything you'd like to discuss, write to us at research@fisdom.com. That's what we do. We help you out. We will help you, by sharing at least some of the perspectives that we feel will be of use to you. So, Suresh, moving forward, we do have quite a number of questions, but in interest of time, I will be picking just a couple of them. And the first question has to do with the closing note of your previous response. जब आपने direct equity, direct investing की बात की थी, this question is also related to direct investing. I am sure that the person who has asked the question got the message straight and clear, but still wants to know, how do we start investing directly? What all should we look at before zeroing in on a stock and investing in it? No, so there's nothing wrong in direct investing, frankly. Let me be very, very clear. खाली आप अपना objective clear रखिए. Please do not come with a view of trading and let's say getting in today and getting out, getting in the morning and getting out in the afternoon. That strategy burns 90% plus of the traders. Yeah. Please have a view of investing, and if you really understand some industries well, if you have the wherewithal to research, then try and understand it quite well and make small allocations. Don't make very large allocation. Don't invest with borrowed money. और देखिए इन्वेस्ट करके आप छोड़ नहीं सकते, आपको मॉनिटर करना होता है. So then make sure that
You're also on the top of it. You're monitoring what is happening in that company, what is happening in the industry, what is happening to its competitor. तो इसे आप मतलब एकदम हॉबी जैसे मत समझिए, थोड़ा सा हॉबी से ज्यादा थोड़ा टाइम लगाइए इसमें। और अगर आपको हॉबी जैसे करना है तो देन प्ले विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, test yourself, build your, let's say, understanding of the market over a period of time. And as your skill improves over a period of time, maybe you can start increasing some allocation. But do not start with a big bang unless you have studied the market quite carefully. And do not start with a very short term objective of saying that I'll invest today in the morning and I'll get out in the afternoon. That's not the way to do it. Yeah. और Right. सारा पैसा एक स्टॉक पे मत डालिए, डाइवर्सिफाइड रखिए थोड़ा। Right. So there is another question which says, when is Baroda BNP Mutual Fund intending to enter the small cap space in a big way? And meanwhile, for whatever other funds that we have, how does a big AUM impact the performance of small cap funds? Very good question. In fact, small cap is one area, and again, we as a fund house believe that we have to build an expertise before we launch a fund. So we have to have the right people, right team structure in place before we come out with the product. In our view, right now, we do not have, we are not yet ready to come out with a small cap fund, but we are building the capabilities. So we have actually built the team already. We will be working on that project over the next few months, and then we will come out with the product. We already have a very well performing mid cap fund that has worked very well over a period of more than a decade. It has actually multiplied investors' money quite well. And as we speak, we are expanding our universe of coverage, building the capabilities within the team, and then maybe somewhere in the next calendar year or next financial year is something that we would probably think about it, provided we are very convinced on our capabilities as they have got built out. Yeah. All right. So one final question. Let me just try and pick one really, really quick. I'm just going through it. Uh, yeah. Okay. Let me just pick this one. So this question is again, very similar to what we spoke about towards the end, but there's a spin on it. What is the number one attribute that one must focus on to become a successful investor? Last time we spoke about a mistake, about the mistakes. It's the same question, but flipped the other way. What is the number one thing that will, take me closer to investment success? So it's a combination of temperament and IQ. And I would think temperament ranks relatively higher than IQ alone. So in my career, I've seen a lot of very talented individuals who are great analysts, but when it comes to taking call or acting on the market, either you become too nervous or you become super confident. So, it's a bit of an oxymoron. You have to have just the right, let's say, balance, when to trust your conviction or when to accept a mistake and move on. The market is a great leveler. It teaches you something every day. None of us is 100% right, which is why temperament becomes extremely important, irrespective of whatever be your capability. You also need to readjust sometimes, or there are times when market tests your conviction and you retest your hypothesis and come back and say, no, I'm very confident. I've retested, I've relooked at it, and I would stay with it. But you need to have that discipline, temperament, in addition to having the IQ for identifying opportunities and investing. Discipline, temperament is equally important, is what I'm trying to say. It's just not identifying the company which is enough. Absolutely. So this brings us to the close of this conversation, Suresh. I feel it was quite a brief conversation in terms of time, but in terms of content and our learnings and the insights that you shared, I feel it was really, really power packed and packed to the brim. We spoke about such a variety of topics, and you shared such valuable insights across quite an array of topics so far. I feel it was a wonderful conversation for me personally. There's so much more that I have learned through this conversation, and I'm almost sure and confident that
even the viewers are taking some notes, and there's a lot that they will get back to reading more about. Guys, you can write to us at research@fisdom.com in case of any questions that we wouldn't have picked. I just realized that the comment section is also talking about questions that were not picked. So, guys, we will try and address it. So, Suresh, thanks a lot. I feel this was a wonderful conversation. Thank you for your time, and thank you for your valuable insights all the more. I'm really looking forward to continuously engaging with the fund house, and all the best for your ongoing NFO in the multi-asset space. Thank you so much, Nirav. Thoroughly enjoyed and really appreciate this opportunity to talk to you as well as through you to all your clients and viewers. Thank you so very much. Thank you, Suresh.